हाँ, शुरू कयो। हाणे कयां शेयर। जी। चङो, तमामु सुठो। तव्हां सभिनी खे स्क्रीन ॾिसण में अचे पई? हा। त ठीकु आहे, अॼु असीं क्लास शुरू था कयूं। तव्हां सभिनी जी तहे दिलि सां आजियां थी कजे। अॼु हिन सेमिस्टर जे चोथें हफ़्ते में, फोर्थ वीक, यू आर मोस्ट वेलकम। रोमनाइज़ सिंधी स्क्रिप्ट में सिंधु एकेडमी जो ही जेको क्लास आहे फॉर एडल्ट्स एंड यूथ। अॼु जो जेको लेसन आहे उहो असीं कंदासीं। उन में जेके फंडामेंटल रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज आहिनि, उन खे रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 उन खे थोरो डिटेल में सम्झी करे ऐं पोइ असीं अॻियां वधंदासीं। जहिड़ी तरह की तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त सिंधी ॿोली जेका आहे सा छा आहे, इज़ जेंडर बेस्ड लैंग्वेज, करेक्ट? सभिनी खे ख़बर आहे न? ऑल ऑफ यू नो। Unlike English, English is not gender based, Sindhi is gender based. ऐं उन में असां अॻियनि हफ़्तनि में जॾहिं अल्फ़ाबेट ऐं वॉवल टेबल्स कयूं हुयूं त उन जो असांखे जेको सबस्टेंस हो त भई वॉवल्स में जेके फर्स्ट 4 वॉवल्स आहिनि, अ आ ए ई, उन्हनि सां को वर्ड एंड थो करे उन वॉवल सां, त इट इज़ डिनोटेड एज अ feminine gender, whether animate or inanimate, living or non-living object. But if it ends with a sound which is a, e, 4 vowels, first 4 vowels, that is generally denoted as a feminine. ऐं साॻी तरह o ऐं o, if the word ends with o or o, then it is assigned masculine gender. इहो जेको बेसिक प्रिंसिपल आहे असां इहो सिखियो लास्ट टाइम। ऐं तंहिंखां पोइ रूल नंबर 2 छा आहे, हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ अ सिंगुलर इन फेमिनाइन जेंडर एंड मैस्कुलाइन जेंडर। हाणे जीअं फेमिनाइन जेंडर में आहे, निष्का सुठी छोकिरी आहे। निष्का सुठी, गुड। छोकिरी, सुठी छोकिरी। हाणे सुठी इज़ ई, डबल ई, आ ए ई। छोकिरी, डबल ई। तो both are feminine. And same thing if I was to say, like, instead of Nishka is a good girl, if I say Namish is a good boy. Namish sutho chokro ahe. Sutho o and chokro o. The a, e, feminine gender and masculine में o. This is simple example I gave you how gender is important to understand in Sindhi language,
to write a correct sentence or to say a proper word. यानी जी I cannot say Nishka sutho chokri aahe. Can I say that? Sutho chokri aahe. Or Namish, can I say Namish suthi chokro aahe? You heard it, automatically you understood what is right and what is not right. Suthi chokri aahe, sutho chokro aahe. The both gender assign adjective and third person. Suthi chokri, sutho chokro. हाणे ये थिया singular. Chokri is singular, chokro is singular. Mana one person. The next rule was how these single or singular is converted into plural in these four vowels of a, e, and o for masculine. तो उन्हें जो रूल कह रहा है, we have to understand. The इन्हें जो रूल कह रहा सिंपल हो, a and a, जेके ब vowels and any words which ends with a and a, their plural will be ऐं साॻी तरह ए ऐं ई वॉवल्स में जेके वर्ड एंड कंदा उन्हनि जो प्लूरल थींदो यूं. हाणे एग्जाम्पल कीअं आहे? ज़ाल, ज़ाल माना अ वूमन. ज़ाल अ इज फेमिनाइन, हिकिड़ी ज़ाल. बट इफ देयर आर टू और थ्री त छा चइबो? प्लूरल ज़ालूं. The a becomes How plural is made? Zala, zalum. And a छा थींदो है? Mala. Mala is a feminine. But if there are two or three, then what is the plural of it? Malaum. This is how became the plural of it. Now, the other two, a, तंहिंखां पोइ A and E, जेके two more vowels आहिनि, त उन्हनि जो plural कीअं थींदो है? Words which end with A and E, their plural becomes यूं. Instead of it becomes यूं. A k is one, but two is akyum. The plural became yum. Akh, akyum. He heka khae, he ba akyum ahen. And then E, chokri, हिकड़ी छोकरी है. निष्का हिकड़ी छोकरी आहे, पर निष्का, नीलम, नित्या टे छोकरियूं आहिनि. यूं. So E was singular and you becomes plural. छोकरियूं. आयो समझ में निष्का? How to make plural of छोकरी? The plural थी वो छोकरियूं. हाँ. साॻी तरह ई में ॿियो अखर करो थो चए, जीअं ॿिली, ॿिली कैट, ॿिलियूं, हाँ. बकरी, ई बकरियूं. ठीक है. हाँ, समझ आया. अ आ
जो प्लूरल थींदो आहे ऊ ऐं ए ई जो प्लूरल थींदो आहे यूं. Now, there may be some exceptions. We will go through the table, but this is generally the principle of making plural of feminine words. Now, the rule for making plural of masculine O and O. O and O. O जो प्लूरल छा थींदो आहे हीअ ह थ उ. The plural of masculine U will be hatha. He hiku hathu ahe. He ba hatha ain. How did plural become from U to a? He hiku hathu ahe. He ba hatha ain. Now, did you see what happened? O plural became a. Now, a already is, as you know, a, e. We said that they denote feminine gender. A, e. But that was only when applied to a singular person. Zala, one person. The moment it becomes more than one, it is zalu. Sagitare hathu u. When it becomes plural, it becomes hatha. Uttu. Uttu is what? Camel. Uttu. The plural jati no. Utta. Nitya, Neelam, Nishka. Basic principle है यो, huh? And the second vowel O also denotes masculine. उन्हें जो principle कह रहा है plural उन्हें वो क्यों तो थे O मा आ किए छोकरो. O, what is plural? Chokra. And what are those? A and A, the first two vowels, which was denoting singular feminine, now they become plural masculine. Hathu, hatha. Chokro, chokra. Class में टे छोकरा आहिन. क्लास में चार छोकरा आहिन. आ. नमिश सुठो छोकरो आहे. ओ. Plural chokra. So this is to give you basic information. Language is gender based. What are the genders which denote that an object is to be considered as a feminine? Is a, e. And what vowels will denote masculine? O and O. There will be few exceptions. We'll come to that. But if you know this principle, what will happen is that you will be able to easily say the correct word in forming a sentence. ठीक है? हाणे अचूं था असीं टेबल ते. I will give you an example here. तमाम simple example है.
In Sindhi language, all relationships have got distinct names. Unlike English. English में छा थींदो है? Basic त चार सभिनी खे थींदा आहिनि. Father, mother, sister and brother. ये चार उन्हनि खे आहिनि. पर उन्हे खां पोइ they don't have any proper name for any relationship. Astounding. English language is supposed to be the most widely used language in the world. It doesn't have proper name for other relationships. Either they make compound words. Grandfather. Grandfather. Yeah. Father-in-law. Compound word. But there is no name for that relationship. You see how surprising it is. A language does not have proper name assigned for relationship. But Sindhi is such a rich language, such a well-established language that we have got name for every relationship. English में छा चवंदा आहिनि? Aunt and uncle and cousin. सब अची विया उन में. In a big basket, you put them all together, sub are aunts. Put all of cousins, they are all cousins. But you will not be able to say cousin how? Mother side, father side, uncle side, auntie side, whose side? Unlike Sindhi, Sindhi has got every relationship has got a name. Such a rich language is. And that, again, as I explained to you, we will be able to apply the principle of singular and plural there also. हाणे हिते ॾिसो. Father's father is known as Dado. Can you all pronounce Dado? Dado. Da. Dado. Dado. सब चो. Neelam, Nitya. Dado. सब चो. Dado. Dado. हाँ. Dado. Da. It has got implosion of tongue touching the upper palate and coming down. Da. Da. Not da, but da may your tongue touches to the back side of the palate. But in implosion, da, it strikes and comes down. Da. And the sound comes from inside. Da. Da, do. Dado. Da, do. Dado. And father's mother, Dadi. Daddy. Daddy. Dadi. And look at the principle here. O, masculine. E, feminine. Did you see here? That's a universal principle. Dado, Dadi. Masculine, feminine. Nano, Nani. Masculine, feminine. Nano, mother's father. Nani, feminine. All of you have got Dadu, Dadi and Nano, Nani. And you remember that I had given that worksheet number 1 for homework, roots in Sindh. I had asked you all to fill it in there. Sindh में मुंहिंजा ॾाॾो ऐं ॾाॾी dash 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 में रहंदा हुआ ऐं नानो ऐं नानी dash 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 town में रहंदा हुआ. Remember that? Nishka, Namish, Mohan, have you filled up that worksheet? Huh. Have you written down where your Nado Dadi रहंदा हुआ, Nano Nani रहंदा हुआ? Nitya, Neelam, Karan, सबनी क्या है? Very good. हाँ go. Chacho. Chacho means father's brother. And Chachi.
Simple. O is masculine, E is feminine, Chachi, his wife. Then Puphi. Puphi is what? Father's sister. Everybody has got a Puphi. Your father has got a sister? No, you will call her Puphi. Don't call her auntie. Puphi. Auntie and uncle, they can be generic names and they are meaningless. Absolutely meaningless. They don't say anything. Puphi. Automatically it is my father's sister. And her husband? Upharu. Upharu. Sagitare. Father's brother. Mother's brother. Mamo. Mo. Mother's brother. And his wife, me. Everybody has got a mamo. Mother has got a brother. Namish. Unmute yourself. Do you have a mamo? Yes. And if he's married, his wife is your mommy. You got it? Nishka, mother's brother and his wife, mommy. Correct? No, I am going to say at this particular point, do you know the rule of plural? How will you apply to this word? You just now learned the plural. Mamo is a singular, mamo. Supposing you had two, what will you call them? Mukhe, ba, Mama. the plural of mamo. Mama. Ma, ma. Ma. Mamo, mama. Chokro, chokra. Mukhe ba mama ahin. Okay, now both are married. तो उन जी वाइफ थी मामी, हिक जी वाइफ थी मामी, ॿिन्ही जूं वाइफ्स छा थियूं? मूंखे ॿ Mamiu. मामियूं, मामी, मामियूं, मूंखे ॿ मामियूं आहिनि. See, in Sindhi language, you have not only defined the gender and through the use of vowel to be able to make plural. ॿ मामियूं आहिनि. हाणे ही सिंपल है. मासी, माउ जी भेण, मासी, मासी. पर तोखे जे ॿ हुजनि, माउ जे ॿ भेनरूं हुजनि त पोइ उन्हनि खे छा चवंदीअ? प्लूरल. नित्या, Male. निष्का, Female. मूंखे ॿ. Supposing your mother has got two sisters, त छा चवंदीअ? Masiu. मासियूं. Yeah, Y-O. मासी प्लूरल मासियूं. मूंखे ॿ मासियूं आहिनि. मूंखे हिकु मासी आहे. मूंखे 4 मासियूं आहिनि. सी प्लूरल कीअं ठही वियो वरी? मासी, मासियूं, मामो, मामा, चाचो, चाचा, पुफी, पुफियूं. So this is an experiment which I am giving it to you to apply that principle which we learned. Gender में how to make plural. From singular to make a plural. Any questions? Nishka, Neelam,
Nitya, Karan, Namish, Sanjay. Chodo number. Plural Sasu. number. Mother-in-law. Sasu. Plural. Ah, Sahuro. Sahuro is father-in-law. Yeah, Sahura would be the plural, right? Sahura. Sahuro. And Sasu. Sas, and Sassoon. Soon. So this is Sasoon. Sasun. Mm. Yeah, Plural will be Sasun. Sasun. Plural. Sahuro. Plural. Sahra. yeah, Chokro. Chokra. yeah, Sasun. नित्या चई सघे थी मुंहिंजी ससु ॾाढी सुठी आहे ऐं करण चई सघे थो मुंहिंजो सहुरो ॾाढो सुठो आहे he doesn't have to say my father-in-law सहुरो distinct name is given to all the relationships. Another example here, sorrow number, wife's brother and wife's sister. If your wife has got a brother, what will you call him? Salo. And if your wife has got a sister, Sali. Neelam Karan Karanji Sali Ahe. Sali. But supposing he had two sister-in-laws, two sisters, if Nitya had two sisters, then what will he say? Mukhe pa salyun ahin. Hikka sali ba salyun. Chao Neelam. Uncle, for line number 5, is it a though or it's a Do. though, not a dough, right? Because there's Do, no the. spirit. D Okay. with a tilde symbol is the. Soft. Okay. Not the. D with a caret is the. D with a tilde symbol is the. Soft. Okay. A do, a di. You see what happened in Sindh, we had very big families. And early marriages used to take place. Namish and Nishka, you can hear this with interest. In Sindh, when there were young marriages taking place, in a same family, there used to be like 12 or 14 children with parents. But the distance from the age difference from the youngest child to the eldest used to be so much, like 20 years. So a newborn will be like a 1-year-old boy, and he may have a brother, eldest brother, who is 21 years old or 20 years old. Now the age difference was so much that among the, say, in the same family, the children, they would not call ही में जो भाव है eldest के इज्जत सां अदो चवंदा हुआ. So supposing Namish had a brother who is 25 years old, the Namish will not say ही में जो भाव है अदो है. Eldest brother is called Ado. And the same way the eldest sister was called Adi. They will never used to take names because the difference of the age was so much that out of respect they used to say Ado and Adi. Eldest brother is almost like in the ladder with parents being there, then the eldest brother and sister, and then the youngest ones. So that word Ado and Adi is elder brother and elder sister. See how rich is this language. You automatically feel so proud of Sindhi language. Say, my God, what is the extent and depth of vocabulary
was developed to define the relationships so that you can give proper respect to each relationship. In English, there is nothing like this. It's a primitive language in comparison to Sindhi when it comes to defining relationships. Son-in-law, Nathi, no compound word like son-in-law, Nathi, daughter-in-law, Nuha, Nathi and Nuha. निष्का नमिश ते समझो पिया मां छा पियो चवां हाँ do you हाँ get a feeling inside मूं सम्झो हा केॾी रिच आहे असांजी लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज okay here husband's brother supposing Karan had a brother so what will Nitya say हीउ मुंहिंजो ॾेर आहे ॾेर ये कोन चवंदो my husband's brother or my brother-in-law no he मुंहिंजो ॾेर आहे and if he was married his wife will be ॾेरानी हीअ मुंहिंजी ॾेरानी आहे संजय साईं ताईं ॿुधो वेठा न हाँ हाँ how each relationship is so well defined ही मुंहिंजो ॾेर आहे हीअ मुंहिंजी ॾेरानी आहे Soro number Salaji Joy. We did not give a specific one to that. कहिड़ो नंबर Soro number Salaji Joy. हा सालो ऐं साली Salaji Joy. We did not सालो give. हाणे सालो उन जी वाइफ खे या त चइबो आहे सालात Salat. हा या साले जी जोइ पर this is where I would say that you may say that there is a little bit of gap Hmm. साले जी जोइ या सालात हिते ही ॾिसो भाउ जी ज़ाल भाउ जी ज़ाल हाणे करण जी भेण हू इज़ इन ऑस्ट्रेलिया उहा नित्या खे छा चवंदी हीअ मुंहिंजी भाॼाई आहे नित्या मुंहिंजी भाॼाई आहे भाउ जी ज़ाल भाॼाई Actually, Uncle, wouldn't Karina would be my Nirana. Correct. Karina will be your Nirana. Your husband's sister is your Nirana. And tu unaji bhajai. See how distinctly each relationship is called out. Nirana, bhajai. ऐं भाॼा ऐं भेण जो मुड़ुसु त नीलम छा चवंदी करण हिन जो केरु लॻे नीलम चवंदी करण मुंहिंजो भेणीवियो मुंहिंजो भेणीवियो आहे my sister's husband भेणीवियो आहे supposing she had two sisters and both were married and she had two brother-in-laws त उन्हनि जे लाइ छा चवंदी मूंखे ॿ भेणी विया हिकिड़ो भेणी वियो प्लूरल भेणी विया आहिनि so I am coming back to the same principle which we learned rule number 2
how to make plural of the feminine and masculine. So today what you have learned here in this lesson is relationships, which are plenty of them. I'm not going to go through all of them. Feel free to go through it. But let me tell you one thing. The more you know, the better your language will be. The more you know, the better your language will be. Because then you will be able to use specific words for your relationship and you don't have to explain. Hite ane. Doheto and doheti. What is this? Granddaughter. Grandson of daughter's children. If my daughter has a son, what will I say? He mijo doheto aaye. If she has a daughter, I'll say, he miji doheti aaye. I've got two granddaughters. The Manila Chajonus. Mukhe ba dohetiu ain. Dohetiu, plural. Dohetiu. Okay. Let me not go through all of these. Yeah, pay attention, please. Even step brothers and step sisters. उन्हें क्या चाहता था वह माटे जी and माटे ती. माटे जी माना step and half blood उन्हें के माटे ती. You know how specific can it be more? He is my step brother. ही मुझे माटे जो भाव आए. ये मुझे माटे जी भेड़ आए. और half हो जाए तो माटे तो and माटे ती. You got to be really proud of this language. I am telling you, it's fantastic. Every relationship is very well understood and defined. Peko. Hane, Peko is what? Wife's parents' family. उन्हें कहते हैं Peko. Peko. Wife's parents and her family is called Peko. Peko. Plural थी नो Peka. चौदह भाई इन्हें पेकी पहरमा न्यापो आया हुआ है. इनविटेशन आया हुआ है. पेकी पहरमा न्यापो आया हुआ है. Message has come. Invitation has come. Don't have to explain. Automatically you will understand that bride's parents side there is a message. Pekema nyapo aaya hua hai. Uncle? Ah. Hikraswala, Peka is for parents of the married woman or Peki? And then, like, is there a Peki difference, like pehra. parents of the married? Huh? Peka mana is a plural that includes the whole father, Family. mother, and all people are in that side. Brother and all that. Chona ne peka hain. Bhai, मेजे ज़ालजा पेका इंडोर में रहंदा आहिनि. Peka. Okay. And then Peki is just for the mother and father. No. Peki ma, supposing somebody comes from there, तो चवंदा मुंहिंजे पेके पहिर मां ही माण्हू आयो आहे. Peki पहिर मां. माना on my wife's in-laws, wife's parents side, somebody has come. Peki पहिर मां मूंखे न्यापो आयो आहे या को मैसेंजर आयो आहे. And supposing she says, I want to go to my parents' house, तो वो छा चवंदी मां पंहिंजे पेके थी वञा. हिंदीअ में तव्हां ॿुधो हूंदो न हिकिड़ो इहो is a funny song is there. मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो.
Maike. That is peke. Supposing she wants to tease you, Nitya can tell you, मां पेके हली वेंदी से तू वेठो दिस जाए. मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो. That's पेके great. हली, मायको and पेको. Nishka, you may not find it funny, but it is. हिंदी में मायका और सिंधी में पेको. ठीक है. हाणे twin brothers. Yesterday I went to this party where we had chonki, and a family came with son and daughter. त हुननि मूंखे इंट्रोड्यूस करायो, चयूं त ही मुंहिंजा जारा ॿार आहिनि. जारा वधीक ॿार वखण जो कोन चई, ही मुंहिंजा जारा आहिनि ॿई. धीउ ऐं पुटु हुआ, पर जारा आहिनि. दे वर ट्विन्स. त उनखे छा चइबो आहे? ट्विन ब्रदर्स जारो ऐं जारी. जारो जारी. ट्विन्स खे चइबो आहे जारो जारी. Why not I stop at this point here? We'll go to Anga. Because this again, as I said, that सिंधीअ में अंग कीअं चइजनि तमामु ज़रूरी आहे असांजो सम्झणु. त हीअ सॼी टेबल जेका आहे असां 100 खां 100 फ्रॉम 1 to 124 आहे. मां तव्हांखे हिन जो सिंपल प्रिंसिपल सेखारींदुसि त इहे अंग यादि कीअं कजनि. हिक खां वठी 20 ताईं तव्हां सभिनी खे अचणु खपनि. हिकु, सभु चओ. हिकु, हिकु, ॿ, ॿ, टे, टे, चार, चार, पंज, 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 छह, 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 सत, 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 अठ, 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 नव, 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 ॾह, 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 यारहं, 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 ॿारहं, ॿारहं, 12, तेरहं, 13, 13, चोॾहं, 14, 14, पंद्रहं, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, अरिड़हं, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 20, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31. 31. हाणे हिक खां 31 ताईं हिकिड़ो कॉलम हिते आहे. 31 इन करे बीहारियो अथमि छो जो दिस नंबर दैट यू यूज़ मोस्टली इज़ बिकॉज ऑफ द मंथ. मैक्सिमम डेज इन अ मंथ इज़ 31. 31. छो त तव्हांखे तारीख़ चवणी पवंदी त अॼु कहिड़ी तारीख़ आहे, कल्ह कहिड़ी तारीख़ हुई, सुभाणे कहिड़ी तारीख़ थींदी, परीहं कहिड़ी तारीख़ थींदी. तारीख़ जेका आहे सा 1 to 31 में सभिनी खे सिंधी में अचणु खपे. तमामु सवलो आहे. करेक्ट निष्का, नमेश? 1 to 31 because you have to use this constantly. अॼु कहिड़ी तारीख़ आहे? अॼु पहिरीं तारीख़ आहे, फर्स्ट वन. कल्ह कहिड़ी तारीख़ हुई? कौन सा दिन था, कौन सी तारीख? कल्ह कहिड़ी तारीख़ हुई? फिर से बोलो, जोर से बोलो. कल्ह कल्ह yesterday कल्ह कहिड़ी तारीख़ हुई? 31. 31. अॼु पहिरीं तारीख़ आहे. सुभाणे कहिड़ी तारीख़ थींदी?
अब क्या हो गया? ब ब सुभाणे 2 तारीख थींदी 2 उसके बाद टे टे परीहं टे 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 कल्ह 31 हुई टियों ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ हुई टियों ॾींहुं डे बिफोर yesterday टिया टिया 30 टी तारीख़ पोइ 31 तारीख़ पोइ पहिरीं ॿी ऐं टी ठीकु आहे अंग असां सभिनी खे अचणु खपनि ऐं ॿियो मुंहिंजी उमिरि डैश साल आहे मुंहिंजी उमिरि 9 साल जो आहे 9 साल आहे निष्का तूं चओ मुंहिंजी उमिरि मुंहिंजी उमिरि 16 साल आहे वेरी गुड 16 साल आहे ठीकु आहे हाणे each one of you must know this and say this without hesitation because the number should be on the tip of your tongue. Your age cannot be a secret to you. It can be secret to me, but it cannot be secret to you. That number should be on your tip of the tongue. मुंहिंजे जूनियर क्लास में सभिनी खे तमामु तकिड़ो ईंदो चवणु मुंहिंजी उमिरि 15 साल आहे मुंहिंजी 12 साल आहे 14 साल आहे हिकिड़ो ॿार आहे जेको सोचींदो वई आहे पोइ चवंदो 7 साल आहे मूं चयो तोखे हेॾी देरि छो थी लॻे सोचण में डोंट यू नो यू आर 7 years old 7 साल why can't you say immediately why you to think 2 times 3 times 4 times 5 times what is so secretive about it tell me त इहे अंग अचणु खपनि ज़बान ते हिक खां 31 ते तमामु सवला आहिनि हाणे मां तव्हांखे वधीक कीअं यादि रखजनि उन जो सिंपल प्रिंसिपल आहे त तव्हीं अचो ॾहाकनि ते ॾहाक माना टेंस 10 सभु चओ 10 ॾह 20 वीह 30 टीह 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 110 120 120 हाणे 10 खां वठी 90 ताईं there is a distinct name for each one of them every tens 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 खां पोइ वरी 100 10 120 130 so it is same ladder but if you know the tens then I will tell you how to expand it further हाणे 10 तंहिंखां पोइ आयो 20 हाणे 20 खां पोइ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 पोइ आयो 30 त हिक खां वठी 8 ताईं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 त छा थियो 20 खां पोइ 21 22 23 24 is that not correct simple 1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 24 25 26 27 28 हाणे when it comes to 30 30 त उन मां हिकिड़ो घटि त थियो 29 29 now after 30 again 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हाणे 39 is what 1 less than 40 39 30 खां हिकिड़ो घटि 29 20 खां हिकिड़ो घटि 19 so if you know the tens then one shot is 50 हिकिड़ो घटि छा थींदो 49 60 हिकिड़ो घटि 59 70 हिकिड़ो घटि 69 80 हिकिड़ो घटि 79 90 हिकिड़ो घटि 89 do you see how the ladder is
So if you know the tens, then one shot becomes un. Via, unvia. Tia, unatia. Chalia, unetalia. Panja, unanja. But once you have reached Dahaka, then Hikbate char pancha sata easily to hoche. Tia, ekatia, batia, tetia, chotia, panti, chati, satutia, tutia. Chalia, इकतालीस बैतालीस तैतालीस चौतालीस पैंतालीस छतालीस सत्तालीस अठेतालीस 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 67 68 Do you see how simple it is? It follows the ladder. So you don't have to remember every number. Automatically it comes to you if you know that dahaka. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 संजय सही तव्हां खे आयो इहो ख़्याल में हाँ निष्का if you हाँ don't like maths this is easier way this is cheating table how to cheat on numbers की याद कजे supposing I was to ask you 54 के सिंधी में तू छा चवंदी है 54 54 in Sindhi will be what? Chova Niha 54 Chovanja 54 and 65 Sindhi में it is hidden now you cannot read says 65 के सिंधी में छा चवंदी है 60 that is 60 20 है नहीं 20 पंज विझो हुन में तो 65 60 and 5 is 65 58 Panjayat 60 में पंज विझो तो 65 same way I'll say 74 तो सिंधी में छा चवंदी है yeah. Chohatari 74 हाणे वो हिते लिखियल आहे पर 70 तंहिंमें 4 ऐड कर 1 2 3 4 74 75 76 नित्या 86 के सिंधी में छा चवंदी है Chahasi. Chahasi. 86 वेरी गुड Chahasi. 80 ऐं 86 नीलम तू छा चवंदी है 97 के सिंधी में Satan, Satan, 97 Satan, 90 is 90 90 में 7 ऐड करना है 97 So how are these words formed? Take the tenors. Da, V, T, H, निमिश तू 36 के सिंधी में छा चवंदे छठीह 36 वेरी गुड टी है 36 करण तू छा चवंदे हाणे अचां थो थोरो डिफिकल्ट है 49 के सिंधी में छा चवंदे उनवंजा 49 सी 49 50 हिकिड़ो घटि 49 उनवंजा 49 उनवंजा हाँ संजय साईं तई छा चवंदा 52 69 के छा चवंदा सिंधीअ में 70 उन 69 69 69 उण घटि 70 खां उण माना 69 नीलम तू छा चवंदी आहे
79 के सिंधी में उनासी 79 उनासी 79 80 मां हिकिड़ो घटि 79 निष्का तू छा चवंदी आहे 29 के सिंधीअ में 29 29 टीहनि मां हिकिड़ो घटि 29 ऐं 19 के तू छा चवंदे सिंधीअ में नमिश अनम्यूट कर 29 उणवीह उण उण remember that word उण Yeah. is the one when you apply to the tenors it takes you one shot 60 के 59 70 के 69 50 के 49 40 के 39 80 के 79 90 के 89 हिकिड़ो घटि if you know this way you don't have to remember all these numbers tenors अचनि उन जो प्रिंसिपल अचे ऐं ॿियो after 60 or 50 or 40 or 30 हिकु ॿ टे चारि पंज छह सत अठ you want to add that 90 ऐं 6 जंहिंखे तू छा चवंदी आहे नित्या Uncle, can you say that one more time, 96 खे please? छा चवंदी आहे 96. हा सिंधीअ में Cha chan chahana chanave 96 हा chanave 96 96 chanave. 96 see this is how it is you break it down and say okay I know no I don't have to remember I know the principle अची वियो तोखे निष्का 16 के सिंधीअ में छा चवंदी आहे 16 16 चओ मुंहिंजी उमिरि 16 साल आहे चओ मुंहिंजी उमिरि 16 साल आहे 16 साल आहे perfect this is one sentence which you have to also write in your roots I am Sindhi उन में आहे न मुंहिंजो नालो निष्का गुरनाणी आहे मुंहिंजी उमिरि 16 साल आहे मुंहिंजो ॾाॾो ऐं ॾाॾी सिंध में हैदराबाद में रहंदा हुआ मुंहिंजो नानो ऐं नानी सिंध में शिकारपुर में या कराची में या लाड़काणे में रहंदा हुआ हाँ इहे जेके सिटूं आहिनि न बेसिक सिटूं तमामु सवलियूं आहिनि बट this gives you a connection how to build on it Sindhi sentences. ठीक है हाणे मां अचां थो असीं अॼु गॾिजी कुझु सिंधीअ जूं सिटूं ॻाल्हाईंदासीं ही जेको 5-10 मिंट पछाड़ी जो पीरियड है न उन में मां चाहियां थो त तई कुझु सिंधी जा सेंटेंसिस तई मूंखे चई ॿुधायो हाणे ही आहे लॉन्ग वीकेंड लेबर डे वीकेंड आहे त तव्हां इन में छा करण जो सोचियो आहे किथे वेंदा छा कंदा या छा कयो अथव तई मूंखे थोरो सेंटेंसिस चई ॿुधायो just few sentences and it is perfectly fine if you have half sentence full sentence quarter sentence 2 sentences जेतिरो चई सघो नमिश तू शुरू कर तो हिन वीकेंड ते लॉन्ग वीकेंड ते छा कयो आहे ऐं छा कंदे मां शिकागो डाउनटाउन वियो हुयुसि मां ज़ू वेंदो
Yes. Yes. माँ गोरिल्ला जा खिलायो खार दो उन्हें खाराए खरायो मुंह गोरिल्ले के खारायो खरायो खारायो वेरी गुड छा खारायो सर व्हाट डिड यू फीड हिम किलो किलो केलो हाँ तो मुंह गोरिल्ले के केलो के खारायो खरायो हाँ हाँ फुल सेंटेंस माँ कल AMC माँ when when the वेंदुस when this माँ movie ॾिसंदो माँ स्त्री 2 ॾिसंदो कैरी डिसन है स्त्री 2 3-2 Descendus. It's wonderful. See, Namish gave us a very good breadth of sentences. What he did and what he will do. Muhi kayo, past tense mein, and mahi kandus. I will do it. This is how you build the bridge of sentences. What you did and what you will do. Very good, Namish. Hane, who else will go now? me Come on. Uncle, I'll go. हाँ तुम जा Subane ma penji seri sa coffee piandas. Ma penje nai apartment me ravandi aya. Minjo apartment tamam suto aya. आए Aye, aye. ॾाढो सुठो तूं अकेली रहंदी आहीं या तूं शेयर कंदी आहीं Akeli. अकेली रहंदी आहियां ऐं हाँ. किथे रहंदी आहीं डाउन Downtown में. डाउन शिकागो में हाँ. रहंदी आहियां Downtown Chicago में रहंदी आहियां. रहंदी आहियां मूंखे अपार्टमेंट ॾाढो सुठो मिलियो आहे ऐं सुभाणे मां पंहिंजे साहेड़ीअ सां कॉफ़ी पीअण वेंदसि Coffee piano में पीअण वेंदसि आई विल गो viendas. Okay. टू हैव कप ऑफ कॉफ़ी पीअण वेंदसि Piano viendas. ऐं पोइ ईअं चई सघी थी असीं लेक ते पंधु कंदासीं पंधु करण माना वॉकिंग विल गो हाँ. फॉर अ वॉक ऑन द लेक हाँ. फ्रंट या कैनाल या जिते बि तव्हांखे हुजे घुमण वेंदासीं ऐं जीअं नमिश चयो असीं सुभाणे पिक्चर ते वेंदासीं AMC में एनी अदर प्लान्स त हाणे मूं ही कयो ऐं मां ही कंदसि कल्ह मूं नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कयो मुंहिंजो अपार्टमेंट ॾाढो सुठो आहे सुभाणे मां पंहिंजे साहेड़ीअ सां कॉफ़ी पीअण वेंदसि असीं लेक ते पंधु कंदासीं या बोट राइडिंग कंदासीं कैनाल ते वेंदासीं ठीक है very good plans to how to now this is what is happening in your mind I know you were trying to translate from English to Sindhi correct you were Correct. thinking and then trying to say how to speak in Sindhi आस्ते आस्ते ये अखर सिंधीअ में अचण खपनि मां वेंदसि मां वियुसि मां खाईंदुसि मां खाईंदसि मां ॾिसंदुसि मूं ॾिठो ठीक है ऐं इहो ॿुधाए मुंहिंजो अपार्टमेंट मुंहिंजे ऑफिस खां केतिरो परे आहे Minjo kama Arizona में. अच्छा So, त मां सॼो कमु चओ ऑनलाइन कंदी आहियां हाँ, हाँ. मूंखे उते वञिणो कोन पवंदो आहे करेक्ट Correct. हा हा ॾाढो सुठो वेरी गुड हू इज़ द नेक्स्ट पर्सन वांट्स टू शेयर ओके करण यू गो कल मुंहिंजो जन्मदिन आहे सुभाणे कल असी कल्ह सुभाणे कल आहे या थी वियो कल्ह
Which color? Yesterday or tomorrow? yesterday. हाँ तो कल जन्मदिन हो. हो हाँ हाँ कल कल मुंहिंजो जन्मदिन जन्मदिन हो. हो हाँ हाँ ॾाढो so सुठो. मुंहिंजो उमिरि 30 साल आहे. 30 साल आहे. तोखे घणी घणी हाँ वाधायूं. हाँ जन्मदिन जी महिरबानी वाधायूं. अको महिरबानी. I feel old. But and then kala asi movie Deadpool and Wolverine Disundus. ॾिसंदासीं. Disundasi. Huh. Tomorrow you are going for a movie, na? No, No, we saw yesterday. so ॾिसी. ditto, right? हाँ कल हाँ असां मूवी ॾिठी. the T the Ditti. T. past tense. Huh. कल असां मूवी ॾिठी. Huh. कल And then मुंहिंजो जन्मदिन हो. Very good. I कीअं चइबो unpack हाँ असीं सामान खोलियूं पिया. खोलू असीं पिया. पंहिंजो सामान खोले जाइ में रखूं पिया. Huh. So tomorrow Subane. Subane Subane Hasi saman kolu खोलींदासीं. kolun kolindasi. huh. Huh. खोलींदासीं. This is future. Huh. खोलींदासीं. असां मूवी ॾिठी. past tense में. Huh. खोलींदासीं is in future. Huh. Good. ऐं ॿियो? Kala asi tiramisu cake kato. अच्छा टिरामिसू केक कटियो. Katio. Huh. असां टिरामिसू केक कटियो. करण जो बर्थडे मल्हायोसीं. Huh. अच्छा. That's it. I We think did together. That's a Yeah, just we did. Yeah. birthday. Yeah. तई जिते रहिया पिया आहियो उते तव्हांजी जाइ किथे आहे? डाउनटाउन में आहे? Asi ॿाहिरि आहे? downtown Arlington में Ravanda. रहंदा आहियूं. Ravanda आयूं. असांखे सुठी अपार्टमेंट आहे. Asi suठी town home आहे. टाउन होम. हा ॾाढो सुठो. असांखे ॾाढो सुठो टाउन होम आहे. ऐं तव्हांखे ऑफिस खां घणो परे आहे? Office Gamma office Pentagon I and then Nitya Work from home. हा त असीं ॿई घर मां कमु कंदा आहियूं. घर मां कमु कंदसि. घर मां ऑनलाइन कंदा आहियूं कमु. हाँ. त तव्हांखे ऑफिस कोन वञिणो पवंदो आहे. No. ॿिन्ही खे ऑफिस कोन वञिणो पवंदो आहे. अच्छा. No, Karan goes into the Pentagon every day. yeah रोज वेंदो आहे? work अच्छा. Huh. अच्छा अच्छा. I take the metro to work and हा then त चओ मां पंहिंजे ऑफिस में रोज मेट्रो में वेंदो आहियां. मां केॾी महिल वेंदो आहीं? पंहिंजो वरी ॿुधाए केॾी महिल वेंदो आहीं ऐं केॾी महिल मोटंदो आहीं? What time do you go? मां सुबुह जो ऑफिस में 7 बजे वेंदो आहियां. 7 बजे. 7 बजे हाँ 7 बजे वेंदो आहियां ऐं शाम जो 6 बजे मोटंदो आहियां. 6 o'clock I return. 5 o'clock 5 बजे मोटंदो आहियां. हाँ yeah 4 o'clock, 6 right? लॻी वेंदा हिकु आहिनि. ॿ टे चारि. yeah 4 5 between हा 5 ऐं 6 जे विच में. हाँ 5 ऐं 6 जे विच में मां वापसि मोटी घर ईंदो आहियां. मां मेट्रो खणंदो आहियां ऑफिस वञण जे लाइ. These are the short sentences. What I am trying to help you is to build in Sindhi. मां मेट्रो खणी ऑफिस वेंदो आहियां. सुबुह जो 7 बजे निकिरंदो आहियां. शाम जो 5 ऐं 6 जे विच में मोटी घर ईंदो आहियां. नित्या घर मां ऑनलाइन पंहिंजो कमु कंदी आहे. ॾाढो सुठो. तमामु सुठो. तव्हां ॿिन्ही खे इहो पंहिंजो वणे पियो जेको नओं टाउन अथव या जिते मूव कयो अथव? लाइक द प्लेस. छा उते ॿिया बि सिंधी आहिनि?
I don't know. We haven't met any Sindhi people yet. अञा गॾिया कोन आहियूं Actually, Um, at Cheti Chand, we met a couple there. My mom's old friend. They live in Arlington or DC, and they messaged me this morning अच्छा asking to meet. So I think Lakshman Metani. मलकानी Yeah, Lakshman Metani, I think. ठीकु आहे ॾाढो Uh, सुठो मां उन्हनि सां गॾिजंदुसि ऐं पोइ असीं पंहिंजो सिंधी सर्कल क्रिएट कंदासीं ठाहींदासीं that's the plan. Huh. ॾाढो सुठो वेरी गुड त ही छा आहे थिंकिंग प्रोसेस सिंधीअ में हाणे अचो संजय साईं हिते ई ॿुधायो कुझु कल मूंखे काम ते वञो हुओ पियो कल्ह मूंखे कम ते वञिणो पियो हुयो आई वेंट फॉर माई वर्क yesterday ऐं हाणे मन मां मां soccer game बि वयुमि मां soccer game सॉकर गेम ते वियसि कॾहिं वई आहीं कल्ह हा कल्ह मां सॉकर गेम ॾिसण वियसि हा टू वॉच हा अच्छा त सॉकर गेम में कंहिं खटियो who won the soccer game? मिनेसोटा का टीम जीते मिनीसोटा टीम खटियो सॉकर गेम खटियो ओके तोखे मज़ो आयो हा मूंखे ॾाढो मज़ो आयो मूंखे ॾाढो मज़ो आयो मूंखे ॾाढो आई मज़ो एंजॉयड अ लॉट हा मां पंहिंजी मां तूं कंहिंसां पंहिंजी गॾिजी वई हुई आहीं? हाँ, किसके साथ गए मां पंहिंजी दोस्त सां गॾिजी वियो मां पंहिंजे मां पंहिंजे दोस्त तन सां साहिरी गॾिजी पंहिंजी वियसि साहिरी मां साहिरी। more पंहिंजी than one friend or only one friend सारी मां पंहिंजी साहिरी सायरी सां सा सां दो गॾिजी सा गॾिजी वियसि व्यस वियसि ॾाढो सुठो हाणे सुभाणे छा कंदीअ what are you Um, planning to do tomorrow बीच जाना बोलो बीच जाना चओ असीं सुभाणे बीच ते वेंदासीं असी जाना असीं सुभाणे अरे सुभाणे माना tomorrow असी सुबारे बीच बीच ते पे वेंदासीं वेंदासीं दासी वेंदासीं tomorrow see one is what you did and one is what you are going to do वेंदासीं means more than one person if you are going alone त चवंदी I will go माना मां वेंदसि but if you are going with someone else असीं वेंदासीं बीच ते वेंदासीं हाँ गॾिजी बीच ते वेंदासीं ॿियो what else uh, छा खाईंदा छा पीअंदा have you planned नहीं अभी कुछ प्लान नहीं किया है अॼु कोन्हे प्लान कोन्हे अञा ताईं कयल ठीकु आहे ॾाढो सुठो वेरी गुड त हाणे sharing Sindhi sentences is like my tutorial class after having learned everything असीं कीअं उहे सिंधी sentences पंहिंजे लाइफ में कमु आणियूं त असीं पंहिंजी लाइफ जूं एक्टिविटीज़ सिंधीअ में ॻाल्हाए सघूं that's the whole purpose this whole crux of the class is त असीं सिंधी ॿोलीअ में ॻाल्हायूं and when you start thinking about your activities in Sindhi माना असीं सिंधीअ में सोचूं बि था सिंधीअ में सोचणु त उन में we are creating a base सिंधीअ में ॻाल्हाइणु सिंधीअ में सोचणु ऐं पोइ असांजी सिंधी लैंग्वेज इम्प्रूव थींदी वेंदी our Sindhi language will go on improving ठीक है that's the main purpose of this whole class असीं पाण में सिंधीअ में गॾिजूं सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए
जो तू निष्का कल क्लास में बि आई हुई अॼु बि आई आहीं कल जे क्लास में तो ॾिठो हूंदो त मां जूनियर क्लास में कीअं सेखारींदो आहियां with lot of videos and playlists ऐं हिते जेको ही क्लास है तंहिंमें I am teaching with lot of grammar details and depth. So you are getting the benefit of both the classes. इन करे तूं ॿिन्ही में अच मां चाहियां थो continue coming in both the classes to make up तोखे जल्दी मेकअप थींदो मतिलबु आहे जो you will come back to the level quickly. ठीक है हाँ ऐं तव्हांखे नित्या नीलम करण भला करीना छो कोन थी अचे क्लास में हाणे जा अभी तो फिर खत्म होगा I think Karina's started a new job. हाँ तो Karina wakes up 4:30 or Karina has to wake up at 4:30 a.m. to attend. But my parents just landed in Australia, and so they will be spending time with Karina and my brother-in-law for the next 2 weeks. So I think after 2 weeks she should come back. But maybe we can convince my parents to wake her up and then come attend class next week. They can all attend. no, I don't want to put a penalty of getting up that early in the morning to attend the class. I can No, see. but she She wants to come. she wants to come. She keeps messaging us saying that she misses the classes. It's just with Monday morning, 4:30 a.m. before she starts work, it gets a it's too bit much. too much. 4:30 is Huh. too much. I won't expect that. तमाम जल्दी है 4:30 तो ठीक है देखिए क्लासेस वीडियो लेसन्स में आहिनि न घटि में घटि हिनखे चईसि त इहे ॿुधंदी करे यूट्यूब ते असांजा ही क्लासेस जेके आहिनि से अवेलेबल आहिनि जीअं आदिति मूंखां शुरू में पुछो अॼु त अंकल ही कहिड़ो क्लास है त चयोमांसि त ही चौथो नंबर फोर्थ वीक शी रिकॉर्ड्स लाइक दैट एंड पुट्स ऑन द यूट्यूब इफ यू मिस एनी you can catch up. जीअं लास्ट वीक जो तव्हां मिस कयो Yes. you were moving into the new Moving and flats. everything, huh? You should be able to catch up on the classes by going back to the YouTube and listen करना तो ताकि उनमें it will build up better which में class miss करण सां you miss some information which otherwise will build the bridge better. ठीक है ना चङो त असीं हाणे क्लास पूरो था कयूं सभु गॾिजी चओ मां सिंधी आहियां मां सिंधी आया आया असीं सिंधी आहियूं असी सिंधी सिंधी आया आहियूं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं सिंधीअ में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा ॻाल्हाईंदासीं ऐं सिंधीअ में सोचींदासीं बि सिंधीअ में सिंधीअ में सोचींदासीं बि जय झूलेलाल जय जय झूलेलाल झूलेलाल अंकल महिरबानी Nirbani. ॿिए हफ़्ते गॾिजंदासीं महिरबानी जय झूलेलाल।